हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज श्रेय वर्मानी फ्रॉम कॉन्फिडो लैंडबेस। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कॉल्ड जॉयविल बाय शाहपुरजी पालौंजी। शाहपुरजी पालौंजी बाय फार इज द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी इन द कंट्री एंड इनका ग्लोबली 60 कंट्रीज में प्रेजेंस है। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर नेम फ्रॉम probably generations and over generations. The company is about 157 years old. प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे मेरा पर्सनल फेवरेट रीजन, मार्केट एक्सप्रेसवे ने गर्म करी हुई है बॉस। एक्सप्रेसवे ऑलरेडी तैयार हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली की तरफ वाले सेक्टर्स हैं, 102 इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंटायर NCR बायर्स हु आर लुकिंग आउट फॉर हाउसेज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। जब आप दिल्ली से एंटर कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आफ्टर क्रॉसिंग अबाउट 7 किलोमीटर्स यू अराइव एट सेक्टर 102 फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट वेयर दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, जॉयविल। दिस पर्टिकुलर रोड 60 मीटर रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है जी द्वारका एक्सप्रेसवे की। मैं बता देता हूँ कैसे। आप द्वारका से आएंगे ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जब आप 102 पर पहुँचेंगे, on to the left hand side you will see an underpass which is almost ready. Followed by that you will be able to see a flyover. जैसे ही आप underpass से निकल रहे हैं, एक flyover आपका left hand side पे। So just try and imagine you're coming from Delhi, you arrived at 102 and now you're turning left towards the city, which is main Gurgaon. So one particular 8-lane road has been announced from sector 102 till Hero Honda Chowk. 8 lanes, sir. You are yet to see 8-lane roads within the cities. एक नेशनल हाईवे के टुकड़े को मोड़कर हीरो होंडा की तरफ मोड़ दिया गया है फ्रॉम सेक्टर 102। सो जितना ये दिल्ली के बायर्स को सूट कर रहा है, उतना ही ये गुड़गांव के बायर्स को सूट कर रहा है। इफ़ यू वर्किंग ऑन सोना रोड, साइबर सिटी, एयरपोर्ट, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, फॉर एवरीवन इट फॉर्म्स प्रोबेबली इन अ सेंटर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से ये 8 लेन जो सड़क है, ये एक ऑलमोस्ट एक हाईवे which has about 5 bypasses. At 102 on this particular road you will see an underpass. शाहपुरजी से आप बाहर आएंगे, you will see an underpass on Dwarka Expressway. Immediately after that there is a railway over bridge which takes you to the city. आप सेक्टर 9A में enter करेंगे। After that when you cross that you will see the third flyover which is almost at the finishing, which is at sector 10 and 10A dividing, also referred to as Basai crossing within the city. Fourth flyover at the moment is missing, which is Pataudi Chowk. Again, for the reference, it's the crossing of sector 10A and 10, and then you arrive at Hero Honda Chowk, where already since about past 4 years there is an underpass. So yes, 8-lane road connecting you to Hero Honda Chowk in exactly 5800 meters. ये गुड़गांव दिल्ली की एक कम्युनिटी को केटर कर रहा है सेक्टर, इसलिए बस चुका है। द स्टोरी डजंट एंड ओवर हियर. There are 9 bypasses starting from 102 sector, which is just at Shapoorji Pallonji. Second one is sector 9A, third is sector 10A, fourth is Pataudi Chowk, fifth is Hero Honda Chowk. If you continue straight, you will arrive at Subhash Chowk, which is Sona Road flyover, which is there. That is 6th in the chain. 7th is Bakhtawar Chowk, the Medanta red light. 8th is Huda City Center's underpass and the flyover. The entire city doesn't know कि वहाँ flyover क्यों बना है, because ये द्वारका एक्सप्रेसवे की चेन में ये 8वां फ्लाईओवर और अंडरपास है। इसके बाद 9th इज ऑन योर गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ से मैग्नोलियास के सामने से आप कनेक्ट हो जाएंगे गुरु द्रोणाचार्य। So yes, strategic location, probably by far the best location on Dwarka Expressway. Also, the entire development in the region started about 12 years back. काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। एंड वी आर ऑन द मेन रोड, वी आर अबाउट 500 मीटर्स फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। और द्वारका एक्सप्रेसवे का भी एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट बताता हूँ साहब। द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड है, हर जगह ऐसी 60 मीटर सड़कें आपको मिलेंगी, बट देन दिस इज एन एक्सक्लूसिव वन बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग द इंटायर गुड़गांव विद एक्सप्रेसवे। तो यहीं पर द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लस एंड माइनस, the way you take the flyover and you come down, that is right over here at this particular point. So it's a fantabulous location. Let's go inside, let's understand the project. Welcome to the Wall of Real Estate, like Wall of Fame of Shapoorji Pallonji. A company doesn't need any introduction. Just behind me there is a wall जो कि बहुत छोटी है to describe the journey of 156 years of this particular company. बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं इनकी कंस्ट्रक्शन
जो jewels इन्होंने create कर रहे हैं, these are the landmarks. I mean, the entire world looks up to them. To name a few, you can see like the first metro station ever to be constructed, Bara Khamba New Delhi metro station was done by them. Indira Gandhi International Airport was done by them. Then you have DLF Cyber City, that's also by Shapurji Pallonji. Then you have the race track, the Buddha International Structure. Then you have Chenab Bridge. I mean, the height of that bridge is by far, I mean, it's bigger than Eiffel Tower. It's a jewel of the country. Then you have Intel, the Imperial, the tallest towers in the country, Mumbai, the Imperial Towers. Then you have Jawaharlal Nehru Stadium. So yes, I mean, we cannot cover their legacy in this particular wall, but then that's by far, it gives you an idea that how easy the job is for the company. I mean, we are also approaching the possession of the phase 1. Yes, so let's go inside, let's understand the model of Joyville Shapurji Pallonji. Come. Now we'll quickly understand the model of this project Joyville. The name is so cute, Joyville. The color schemes of the project are yellow, purple and red. 18-acre project, very important. कितना बड़ा लैंड है, 18 एकड़ का ये लैंड पार्सल है जिसमें आई मीन शाहपुरजी जॉयविल कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है कि कितना सुंदर सा ये एक वेलकम जेस्चर है बिल्डर की तरफ से, वेर इन दिस डेंस ग्रीन्स राइट एट द एंट्री. देन यू हैव ब्यूटिफुल वाटर बॉडीज आई मीन टू वेलकम यू naturally Joyville. The theme is to have very superior plantation in the particular project. So the garden areas, the green areas are divided among the 3 categories: topaz, coral and sapphire. Accordingly will be the colors. And I mean, see, you have everything over here. For the sports, we have basketball courts, we have cricket pitch, we have skating rinks, we have squash court. We have many activities for the sports enthusiasts. We have, I mean, for the elderlies, we have senior citizen gardens. You obviously for the kids, the entire project has a lot of garden area. Also, there is a dedicated kids play area as well. The project enjoys a 24,000 square feet clubhouse. The construction of the project is the RCC structure, which by far is commonly known as Maivan shuttering. So yes, the life of the towers, the foundation, everything is so very strong. The finishing, the finesse, everything. I mean, obviously it goes with the tag Shapurji Pallonji. इस project के सामने 100 एकड़ का हुडा गार्डन है. आप इमेजिन करिए सर, आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली से गुड़गांव से सामने 100 एकर्स का हुडा गार्डन. आई मीन दैट ऑब्वियसली is by far the biggest huda garden available on Dwarka Expressway, which is just across your gate. I mean, so you get to enjoy the community living. Also, the builder has created nice 36 high street retail shops to serve you better. I mean, obviously सारी चीज़ें जो आपके क्लब में अवेलेबल नहीं है, आपके मार्केट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करी जाएंगी. Also, recently it was in the newspapers everywhere. You can Google it. Sheetla Mata Devi Medical College, the first ever medical college of Gurgaon, is also a part of Sector 102, wherein the government is putting 690 crores for its development. It is one of the biggest in Gurgaon, and also the civil hospital in the city is just across the flyover. जो ये 60 मीटर रोड है, ये सीधा आपको सेक्टर 10 में एंटर करवाती है, जहाँ पर हमारा सिविल हॉस्पिटल है. So you are surrounded by a lot of schools. You have DPS, you have Gurugram, Global Heights schools and many more in the vicinity because area already habitated है. यहाँ से city बहुत ही नज़दीक है, and also because of the 60 meter connectivity along with 5 flyovers and underpasses, you get a very quick 5 minutes access to the main city also. I mean, so you have all the amenities combined with the super construction quality and the concepts of topaz, sapphire and coral makes it a real buy. Trust me, there are limited units available. We have a beautiful range of 3 BHK houses spread in 1692 square feet and 1852 square feet, which is the topic to be covered in this particular project. Now, after looking at the model, allow me to take you to the particular sample show apartment that we have for you. Let's go inside. So I am here presenting you now the majestic 3 BHK layout by Joyville Shapurji Pallonji. I mean, it's 1852 square feet. Trust me, by far you would not have seen such a fantabulous layout among these sizes like 1800 and 1900 square feet. बहुत ही एक magnificent layout है ये. इसमें ये 3 BHK plus 3 toilets का layout है. There are 3 very spacious balconies also attached with it. Premium specifications के साथ ये apartment आता है. आइए इसका हम show apartment देखते हैं. Let's go inside.
So the face of the particular house comes with a plush wooden door. I mean the quality of the wooden door is really superior. बहुत सुंदर layout है. Please welcome. I'll show you the entire house. So as you enter in the front and the left hand side, आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्ट्रेच हो जाता है. तो इस लेआउट को हम थोड़ा सा और बेटर समझेंगे. आप घर में घुसेंगे, यू विल सी अ वेरी वाइड स्पेस. ये ड्राइंग एंड डाइनिंग कहीं से भी इट डजंट अपीयर कि ये 1852 स्क्वायर फीट में है. Usually this kind of size is visible in about 2500 and plus sizes. So that is the key. आप शाहपुर जी, पलौन जी, I mean you are with the most premium company, तो naturally layouts and the efficiency has to be very superior. The depth, the width of the particular drawing and an L shape which has been given to the dining area, which actually eases out, and also it creates a separate compartment for the dining area, so that if there is a small gathering happening in your particular house, the living area does not get disturbed with the dining space and the vice versa. पूरे layout में हम थोड़ा सा layout को और let's try and understand it deeply. जैसे हम enter करते हैं left hand side, you see a very broad and a very wide living and dining space. Onto the left hand side, as we entered, onto the left hand side, you'll be able to see a door over here. That is the first bedroom. Opposite to it, which is the L shape of the drawing and dining, is the rest of the particular house. This beautiful drawing and dining comes attached with a majestic balcony. साथ balcony का बहुत important role है. आप इस पूरे को end to end देखिए. I mean, it's really wonderful. You can really run a party of about 20 people in this particular space. It's really fantastic. So before going into the bedrooms, I would like to showcase the kitchen first. I mean, kitchens play by far the most important role. कितनी effectively आप इसको plan कर पाओगे, वो kitchen से बहुत ज़्यादा matter करता है. You're going to love it. Let me take you to the kitchen, please. So just diagonally opposite to the dining space and the balcony is your kitchen. Kitchen is majestic. It is of the size of a bedroom. I mean, the dimensions are about 9 by 12, sir. I mean, it's usually the sizes of the bedrooms. I mean, the builder understands Indian kitchens are by far one of the most important regions in this particular house. आप subconsciously, consciously, you spend more than half of your day in the kitchen. So yes, look at the magnificent space available in this particular kitchen. There are counters on both the sides, and the way I'm standing, I mean, there's a lot of space. It can accommodate close to 5 or 6 people at a time. Obviously that is not required, but just to give you an idea how big the size of the kitchen is. Kitchen also comes with vitrified tiles, premium quality, and you can look at the delivery standards of the modular kitchen. Yes sir, you heard me right, modular kitchen is the part of the deal. बहुत premium quality की modular kitchen from brands like Godrej, Interior और like brands. That will be the delivery standards जो आपको इसमें ऑफर करे जाएंगे with chimney and hob. इस किचन के साथ आपको यूटिलिटी बालकनी दी गई है. यूजुअली इन लेआउट्स लाइक 1800-1900 स्क्वायर फीट आप देख पाएंगे कि छोटा सा बालकनी अटैच कर दिया जाता है. सो अब दिस इज अ प्रिटी बिग बालकनी. इसमें प्रॉपर 3 से 4 लोगों के खड़े होने की जगह है. आपका यूटिलिटी स्पेस घर का बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया रहता है. आपके जो कपड़े धुलने का प्रोसेस है, दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इट every weather, everything. So you need to have space to wash your clothes, also to dry them also. इसके अलावा many people prefer an additional sink. अगर किचन में जगह है तो why not? I would love to install an additional sink. जो भी हमारे used utensils हैं वो किचन के बाहर वॉश करे जा सकते हैं. And keeping your kitchen towards the dry side, आप वहाँ पर अपने साफ utensils को आप यूज करिए. The kitchen along with the balcony acts as a separate compartment. ये बहुत सारी जगह है. It's bigger than most of the kitchens that you will see in the other layouts. That's really fantastic, and I am excited to show you the rest of the house. So I'm standing in the center of the drawing room. So as you exit the kitchen, आपके left hand side पे drawing room आ जाता है. वहाँ से further right hand side पे was the entry. Kitchen के opposite you have master bedroom and the second bedroom. The first bedroom is aligned next to the drawing room area, which can be used as a guest bedroom also, because it is separated from the other 2 rooms. So let us go inside. Let's see the first bedroom, please.
So first things first, bedrooms, they come with wooden flooring, laminated wooden flooring of a very premium quality. The color shade also is very very unique. बहुत ही अच्छा सा डिजाइन है पूरे लेआउट का, तो उसकी इफेक्टिवनेस आपको बेडरूम्स में भी देखने को मिलेगी. The space is quite decent. It has its own private washroom attached to it. The color schemes, the anti-skid tiles, the premium fittings in the washroom by Kohler or Serra or Jaguar or like brands. That is what the company promises to provide. Also, bedroom में there is a proper provision जहाँ पर आप अपनी एक बड़ी almirah setup कर सकते हैं. You can have a proper big wardrobe attached over here without eating up a lot of space from the main area. इस पर्टिकुलर बेडरूम की जो बालकनी है दैट गेट्स शेयर्ड विद द ड्राइंग रूम वन, सो यू हैव द एडवांटेज टू enjoy the bigger balcony of the particular house. Have a look at the washroom. I mean, it's a beautiful space. I mean, it's a nice bedroom with 11 by 12 square feet as the dimensions. Let's see the bathroom please. A nicely designed, a compact washrooms comes attached. बहुत ही एक अच्छा डिजाइन है टाइल्स का, which are covering almost 100% of the walls. Anti-skid tiles हैं, your safety is their priority, so obviously they have kept everything in consideration. Premium pipes, premium sanitary fittings is what the company's promises. So yes, I mean that's the first bedroom for you. So as I exit the first bedroom, I'm back to the main drawing and dining area. जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे, on the left hand side is the main balcony of the particular house. It's very spacious. Look, I mean you can create an artificial garden over here. आप जैसे इस वीडियो में देख पाएंगे उसमें नीचे एक आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है. देयर आर प्लांटर्स. स्पेस होने से उसको यूज करने की आपकी चॉइसेस हैं. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेस्ट. सम पीपल वुड लाइक टू पुट कोई यहाँ पर एक स्विंग, एक झूला लगाएगा. सम पीपल वुड वांट टू हैव प्लांटर्स. नेचर लवर्स वुड सर्टनली वांट प्लांट्स सराउंडिंग द एंटायर balcony, and this balcony gets shared with the first bedroom that we have just seen in this particular video. यहाँ से on to the left hand side is your kitchen, and opposite to it are the other two bedrooms. So now I am going to take you to the second bedroom of the particular house. So as we arrive over here, इस यहाँ पे डाइनिंग स्पेस के साथ आप देख पाएंगे कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है. दिस वॉल कैन बी यूज्ड एज अ बुक शेल्फ. आप यहाँ पर और तरीके की भी अपना यू कैन क्रिएट अ चेस्ट ओवर हियर. It's a fantastic layout. Let's enter the second bedroom please. Again a spacious bedroom. फर्स्ट बेडरूम से ये थोड़ा सा साइज में और बड़ा है. इसमें बालकनी का प्रोविजन नहीं है. ऑल्सो दिस पर्टिकुलर बेडरूम गेट्स टू यूज द कॉमन बाथरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस, एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम. अगेन अ लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, अ लॉट ऑफ स्पेस. इट्स अबाउट 13.5 feet इन द लेंथ. काफी अच्छा स्पेस निकाला है. ऑल्सो आपकी सनलाइट और वेंटिलेशन को ढंग से दिमाग में रखते हुए डेवलपर हैज गिवन, I mean they have used one entire wall. उसका 80% आपका एक फ्रेंच विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, so that you do not miss out that feel of having a balcony in this particular bedroom as well. After all, it's 1852 square feet, so we have to keep everything in consideration. The bigger bedroom sizes are the preference. I mean this is what the buyers are looking for. There are adequate balconies. There are 3 balconies in this particular house. So this is the second bedroom. I mean it's a majestic size. एंड इसमें जो कबर्ड्स का प्रोविजन है, आपकी 3 बड़ी अलमारियां आ सकती हैं, तो काफ़ी सारा स्पेस है, प्रिवेसी है. किसी भी दूसरे बेडरूम को आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे. इट्स अ वेरी गुड स्पेस अवेलेबल. एंड नाउ आई विल टेक यू टू द थर्ड एंड द मास्टर बेडरूम प्लीज. So as I exit onto the left hand side, I have the master bedroom, and on the right hand side is the guest washroom. I mean it's the common toilet to the entire house, which is very important. See, because having 3 bathrooms attached with 3 rooms might hamper your privacy in given scenarios that you have your guests visiting you. आपके guests में, आपके close relatives में तो आपको problem नहीं होगी कि आप अपने common, अपने personal space को access करने दें. But if you have a guest which is not very common, आपके कोई service provider, insurance agents and a lot of people visit the house, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर, एक बहुत बड़ा एक वॉशरूम यहाँ पर कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, which increases the utility of the house. I mean this has to be shared with the entire house and also with the second bedroom. Let's have a look at the second washroom please. The common toilet. See, the dimensions of the washrooms are 5 by 8 feet. I mean that's a lot of space because again पानी है सब. You have to have separate areas for the wet and the dry sections in the washrooms. स्पेस अच्छा दिया हुआ है.
टाइल्स इसको और ब्यूटिफाई कर रही हैं, और जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, दे आर ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ओवर हियर. सो this is by far a very superior space available in this particular layout. Let's enter the master bedroom. I was waiting to show this particular bedroom to you. आइए. See, master bedrooms are obviously सबकी एक इच्छा होती है कि मास्टर बेडरूम कितना सुपीरियर बनाया हुआ है. ये बहुत ही एक अच्छा लेआउट यहाँ पर इन्होंने मास्टर बेडरूम का दिया है, जिसमें लेंथ आपको मिलती है ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेड प्लेसमेंट आपकी ये विड्थ है. तो यू हैव अ लॉट ऑफ मूविंग स्पेस अवेलेबल आफ्टर कीपिंग अ किंग साइज बेड. ऑल्सो इसकी एक बहुत बड़ी बालकनी इसके साथ आपको अटैच्ड मिलेगी. अगेन मास्टर बेडरूम है, तो यू हैव टू हैव योर प्रिवेसी ओवर हियर. इन द इवनिंग यू कैन एंजॉय द सनसेट. आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, ये बेडरूम खास होना चाहिए और इसको बहुत खास बनाया गया. इंपोर्टेड वुडन फ्लोरिंग है. यू विल सी द शेड ऑफ द वुडन फ्लोरिंग हैज स्लाइटली चेंज्ड ओवर हियर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. डिड यू नोटिस वन थिंग? यहाँ पर एक बहुत बड़ा कबर्ड स्पेस, वॉक इन ड्रेसर एरिया दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो not very common in layouts like 1800 and 1900 square feet. So yes, this displays how effectively the space has been utilized. इसकी efficiency ज़्यादा है. It's a very good layout. Let me show you the dresser and the master toilet, please. So that is where from you enter, and on the left hand side अपने bedroom के left side पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा dresser है. It's about 8-9 feet in the length. साब स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है. घर में बहुत सारा सामान रहता है, हर कमरे में इतनी स्पेस दी हुई है कबर्ड्स की. मास्टर बेडरूम को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए ड्रेसर एरिया है. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर शो हाउस, देयर इज ह्यूज प्लेसमेंट ऑफ 2 बिग कबर्ड्स ओवर हियर, व्हिच एक्चुअली is probably more than what is required. That gives you a lot of privacy also. तो यहाँ पर आप comfortably you can change, आप अपना आराम से effectively storage space manage कर सकते हैं, और इसके साथ आपका master toilet आ जाता है. आइए देखते हैं इस master toilet को. Again, very fancy toilets. I mean, it's after all, I mean, the price at which it has been aligned, everything is too good to be true. Magnificent tiles again covering the 100% walls. The wet area is separate. Glass paneling नहीं है, आप इसमें install करिए. You can separate the shower with the WC and your wash basin. It's a beautiful space to live in, isn't it? What do you think about it? Back to the master bedroom. Such a fantastic layout. I'm sure you're in love with it. जितना मुझे पसंद आया है, I'm sure आपको भी उतना ही अच्छा लगा है. 3 BHK, 3 toilets, 1 toilet being a common to the entire house. A magnificent kitchen. बेडरूम जितनी बड़ी साहब आप किचन, आई कैन गारंटी अगर आप 1852 एंड कंपेरेबल साइजेस में अगर ढूंढ पाएं, आई वुड लव टू वांट टू विजिट दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट. इट्स बाय फार अ वेरी सुपीरियर 3 BHK layout. डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है साहब. ये वो कॉन्ग्लोमरेट है. दिस कॉन्ग्लोमरेट इज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ 4500+ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स. इन्होंने 140 से ऊपर ब्रिजेस बनाए हैं इन द पर्टिकुलर कंट्री. This particular company has developed 100+ kilometers of elevated and underground metro. This conglomerate is behind the development of your premium housing. पूरी सोसाइटी के आपके जो themes हैं, topaz, sapphire and coral, the dedication and the kind of involvement the builder has shown towards the activity areas, यहाँ पर बहुत कुछ available है to enjoy, to unwind. I mean, also with a majestic layout. It's by far one of the biggest companies in India. There are limited options available. Please do not miss this particular opportunity because Dwarka Expressway बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है. And again, after year on year, you will see the prices will be increasing obviously because it's an elevated corridor taking you to the airport. It's absolutely fantastic. This is the right time. I would request you कि please आप भी इसमें आएं, इसको देखें, and also spread this information among your family and friends who might be struggling out to find out the right pricing and the right layout matching their particular requirement. Yes, Shapurji Palonji Joyville is the project for them, and we are more than happy to answer to all your queries and the questions that you may have. पूरे throughout the video you have the number displayed on your screen. आप please इसको dial करें, book your site visit. This is Shreya Vermani signing off from Confido Landbase. Thank you so much.